Please join for this program. So the answer and the solution of this paper is being recorded. Question number one, background of the case, the background of the case. Question number one is elaborate interpretation of both part and partial coefficients. We will simply go through each and every table related to the coefficients. Because in the table related to the coefficient, you can find only partial correlation, the last two columns. Okay. I repeat the concept which we have already done in the class. Now, for example, if I refer you to the variable instability या stability का variable है, तो अगर आप इसके सामने देखें, the partial correlation is minus 0.54, which is 5.4%. इसका क्या मतलब होगा? Now, when you look at the dependent variable, which is domestic inflation, so it means after removing the effect of other variables, for example, money supply, exchange rate, prices of important goods from USA, you remove the effect of all the variables from domestic inflation, which is a dependent variable, and removing the effect of all these three from the instability or stability variable, whatever is the residue from both, when you relate and you find the correlation of the residue, that is known as partial correlation. And what is the part correlation? So in case of partial correlation, you have to remove the effect of all the variables from this relevant variable instability. See that when you are discussing the partial correlation in front of prices of imported items in US dollar, तो इसका मतलब ये होगा कि you need to remove the effect of all other variables, instability, money supply, and exchange rate. When you remove the effect of all these three variables from the imported price, from the prices of imports from USA, and जो भी रेसिड्यूल बचेगा, variables का when you remove the effect of all these three variables from the variable of inflation, जो dependent variable है, उसका भी रेसिड्यूल बचेगा. When you measure the correlation of these two residuals, this is known as partial correlation. Part correlation, which is here 48.1%, if we refer to the prices of imports from USA, जो कि 48.1% है, इस part correlation का मतलब ये होगा कि we have removed the effect of all other three variables from this particular variable, जो कि imports from USA, and the effect of these three variables has not been removed or deducted from the dependent variable, जिसको हम inflation कह रहे हैं. तो ये original variable will be like inflation, and the residual will be after removing the effect of three variables from prices of imports from USA. तो जो उसका residual बचेगा और ये original dependent variable original होगा, इनके दरम्यान जो correlation है part. So in case of part correlation, we remove the effect of other variables from only one variable, and we do not remove the effect of these three variables from the dependent variables. इस case में, तो ये part correlation है. Sir, एक मिनट से pause कीजिए सर. जो आपका क्वेश्चन है नोट कर रहे बात पूछनी, क्योंकि because we are discussing solution. ठीक है. ये लेक्चर. अच्छा, अब ये आ जाएगा. आप देखें, अगर आप पार्ट एंड पार्शियल कोरिलेशन को, इसका नेक्स्ट जो लेवल होता है वो यू नीड टू कंपेयर द पार्ट एंड पार्शियल कोरिलेशन. In this case, when I refer to import prices in US dollar, imports from USA, prices of imports from USA, तो इस केस में पार्ट कोरिलेशन is 48.1% and partial correlation 49.1%. There's not much difference between the two. So it means whether to remove the effect of other three variables from both in local inflation and the prices of American products
sent to Pakistan, they export to Pakistan, it doesn't matter. Partial correlation are almost the same. There is minor difference, 49% and 48%. There is a difference of just 1%. तो इस मतलब में ये कोई इसका मैटर नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप ऊपर देखें जस्ट इसके ऊपर एक्सचेंज रेट के फ्रंट ऑफ एक्सचेंज रेट यू कैन सी द पार्ट कोरिलेशन इज 1.4% and the partial correlation is 1.6%. Slightly there is a gap. There is a gap to an extent of 0.2%. तो उससे ऊपर देखें उसमें ज्यादा गैप है, 46 है और 54 है पार्शल। तो यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन है या इफेक्ट रिमूवल है अदर वेरिएबल्स का, तो वो मैटर करता है। अगर दोनों से निकालेंगे तो स्टिल द पार्शियल कोरिलेशन इज हायर, प्योर कोरिलेशन जिसको कहते हैं, दैट इज हायर। And one, when you remove the effect of the variables only from independent variable, जिसके सामने जैसे मैं बात कर रहा हूँ स्टेबिलिटी, तो ये पार्ट और कोरिलेशन इसी तरह आप सारे टेबल्स में आप देखेंगे और उनको बड़ा डीपली आपने डिस्कस करना होता है। ये चीजें हमारे डिटेल्स के साथ आपने क्विकली डिस्कस करना है कि whether the global of the effect of certain variables matters or it does not matter. इस पर्सपेक्टिव में वो बच्चों की रनिंग कोरिलेशन इतना है तो the strong correlation, weak correlation, the moderating वो अपन ग्रेड लेवल पे कर रहे हैं। यहाँ पे आप एक मीनिंगफुल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। यहाँ डिस्कशन बार में क्या होगी, whether it doesn't matter you remove the effect of the variables from this particular variable, या when you remove the effect of these three variables from both DB and this particular IB, तो कोई फर्क पड़ता है कोरिलेशन पे, ये नहीं पड़ता। तो पार्शियल कोरिलेशन का रिलेशनशिप या उसका कंपैरिजन डिस्कस करना है। अच्छा, अब आप आगे आ जाए, इसी तरह बात सारा ऊपर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द रीजन फॉर वेरिएशन आर स्क्वायर वैल्यू फ्रॉम डिफरेंट मॉडल्स। अब हम ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी ऑफ आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इज द कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन which shows variation in the dependent variable, the proportion of variation in the dependent variable explained by the independent variable included in the model which has been estimated. Here is the three models, there must be 3 R square. अगर हम लिख रहे हैं कि R square, for example, in model 1, R square is equal to 6.9%, ये होगा 269 है। दूसरे मॉडल पे जाना है, the R square is 24.4%. Relatively less. Yes, When you go to, when you refer to model 3, the R square is slightly higher, 48.5%. The highest model 3, the highest R square is in model number 3. Now, I discussed the formula in detail. Now, in the numerator of the R square, there is explained variation. Now, when we say explained variation, what does that mean? It means variation in the dependent variable, which is inflation here. So, variation in the dependent variable inflation explained by the different variables included in the model. What are the different variables? The stability variable, the money supply variable, the exchange rate variable, and the prices of imports. So these 4 variables explain change in inflation by 26.9% on the model number 1, and the other variable जब आप इसके लॉ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, now taking variable drop हुआ है। Yes, sir. Now try to understand. Question is how R square value is changing across the model. There can be number 1 of number 1 reason can be the number of independent variables included in the model. So if you are increasing the number of independent variables in the model, Value is the R square should increase. Yes. So I have a number of explanatory variables.
जो कि कॉज कर रहे हैं वेरिएशन इन द इंफॉर्मेशन, if you go on adding more and more variables, obviously their contribution is increasing in the explanation of variation in the dependent variable. तो ये reason है. आप देखें the highest number of variables are added in model number 3, which means these are this is the maximum number of independent variables. So obviously आप that is what Oscar is not doing. So ये clear reason है. So Oscar is what sometimes we say the anatomy of Oscar, which means Oscar is sometimes misleading. You simply add on the variable independent the Oscar value will increase just by counting, just by adding one more. Oscar will increase. Why is this meaning? Because here you are not incorporating the effect of additional counting. Variable effect to have additional counting. 1, 2, 3, 4. तो कैसे कंट्रोल करते हैं बाय कंट्रोलिंग द डिग्री ऑफ फ्रीडम. दैट इज द टास्क ये हमने पढ़ा था. तो ये यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं है कि आप अनाटॉमी या किसके टास्क ये नहीं. यहाँ पे सिंपल सवाल पूछा गया है. पहला कोई है सिंपल क्वेश्चन इज कि why there is variation in Oscar. Simple answer is the number of Oscar is increasing. That is what उसके बाद नंबर 3 का है कंट्रास्ट है मॉडल B with model 2 statistical significance of supplementary variables. इसका मैं आपको बता देता हूँ. You can refer to your class notes. I explain the F test wherein we incorporated R square new minus R square old divided by the number of variables to the minimum of A. Partition का 2 and 3 का कहा गया है. तो आपने सिंपली काउंट करना है कि 2 में कितने वेरिएबल हैं. You just count 1, 2, 3. And how many variables are there in the model 3 and model 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variables. You have added 4 more variables. So इसका मतलब ये है आपने इसको बनाया था कि how will you decide which one is Oscar new and which one is Oscar old? Oscar new is always the model with large number, with more number of independent variables. Model will include more independent variables. उसका Oscar will be considered as new. तो इसका मतलब मैं स्पेसिफिकली बताऊं तो आप क्या फॉर्मूला अपने नोट्स में जाएंगे. The Oscar new is 0.485 and Oscar old will be on model number 2 which is 0.244. इनका डिफरेंस लेंगे यानी Oscar new minus Oscar old divided by आपने जितने एडिशनल जो मॉडल नंबर 3 का उनको काउंट करेंगे. कितने एडिशनल आई उसमें 3 में 7 है तो 4 आएगा. उनका डिफरेंस को डिवाइड करेंगे 4 से. देन 4 डिवाइडेड बाय फार्मूला देखो 1 माइनस Oscar new. अब 1 माइनस Oscar new कौन सा आएगा. मॉडल नंबर 3 का Oscar which is 0.485 and divided by degree of freedom क्या होगा इसका. वो मॉडल नंबर 3 में डिग्री ऑफ फ्रीडम जो गिवन है what is that. It is 167 and over the other real world. n minus k होता है ना यानी सैंपल माइनस नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. वो ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेटेड है. आप कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. 167 आएगा डिनोमिनेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम और न्यूमरेटर का आएगा जो नए वेरिएबल ऐड हुए हैं. 4 नए वेरिएबल ऐड हुए हैं
तो न्यूमरेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 होगा एंड डिनोमिनेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी माइनस के विच इज 167। नए मॉडल में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है n माइनस के वो आएगा। बस उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, बाकी आसान है, आपको कैलकुलेट करेंगे कि आंसर ये दिस इज नोन एज ये f की वैल्यू। तो मैं ये रिकॉर्डिंग के बाद बात का बोर्ड में लिखूंगा दोबारा। तो if the calculated value of f is greater than 4, ये हमने बेंचमार्क रखा था, एग्जैक्ट 4 नहीं है, 3.99 है, 3.9 है, उससे राउंड अबाउट भी है, तब भी उसको 4 कंसीडर कर सकते हैं, because you are not given the table. I have not provided any table of the particular values. तो हमने एक रूल ऑफ थंब डिफाइन किया था फॉर वैल्यू इज 4 टू कंपेयर एंड फॉर वैल्यू 6 टू कंपेयर। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा उसको 4 से कंपेयर करेंगे, आंसर इज ग्रेटर देन 4, तो आपका डिसीजन ये होगा द न्यू वेरिएबल एडेड इन मॉडल 3 प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन द वेरिएशन ऑफ inflation. Your target objective variable is always inflation dependent variable. ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज जनरल एक्चुअली, which is actually this develops the purpose of this question is to develop the habits of students reading the results from the page and basically read somebody tell the story. कैसे आप देखेंगे very quickly you will read the key stats which are the variables which are statistically significant, which are variable indicating statistical significance. So now very quickly if you have to come on only prices of imports from USA have a significant impact. Yes. The second is local money supply, which is significant. But if you look at sign, money supply is carrying the sign negative, which means it has negative impact. Money supply increases. यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट है, तो रेट यहाँ पे इन्फ्लेशन है ना, इन्फ्लेशन रेट में कैलकुलेट किया गया, तो इसका मतलब है रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस एंड डिक्रीजेस, द इन्फ्लेशन राइजेस एट स्लो रेट एंड डिक्रीजिंग रेट। अगर मनी सप्लाई कम बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन राइजेस बट एट ए स्लो रेट। ठीक है, तो पाकिस्तान का केस है। इसका मतलब ये है कि जो कहा जाता है जो मीडिया में बैठ गए इनकी कानून हमारे एनालिस बात करते हैं, दिस इज टेक्स्ट बुक बेस्ड नॉलेज, व्हेन दे से व्हाई देयर इज इंक्रीज इन इन्फ्लेशन दे आंसर दैट मनी सप्लाई इंक्रीज बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। एक्चुअली दे आर इंटरप्रेटिंग Pakistani inflation on the context of an advanced country. They mean this theory does not apply to Pakistan. In case of Pakistan, it is not money supply which is causing inflation. There are multiple other factors. यहाँ पे yes, inflation increases, but it is not increasing at a faster rate. Slow rate is not supply की वजह से पाकिस्तान में नहीं हो रहा। अभी तक अब आपको ये मैं आपको बता दूं, इससे देर लगेगी आप समझा, अदरवाइज आपने वेरी क्विकली आपको देखना है बड़ा उसके बाद लुक एट द प्रेसिडेंट्स ऑफ मॉडल नंबर 2 again the law price of US economy, the US imports 7.23 significant है, दूसरा significant है वो आप देख रहे हैं कि एक्सचेंज रेट है US डॉलर और पाकिस्तानी रुपये,
तो ये सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करनी है। इंपोर्टेड प्राइस पीछे आया तो मनी सप्लाई, यहाँ पे आ गया एक्सचेंज रेट, और इंपोर्टेड प्राइस जो प्राइस ऑफ इंपोर्ट फ्रॉम यूएसए इज द कॉमन फैक्टर, उसमें भी था। तीसरे मॉडल पे जाएं। Sir, how do you explain the stability and instability of the model? मैं आता हूँ, वो सिग्निफिकेंट नहीं है ना। हम सिर्फ वेरी क्विकली जब हमने डिस्कशन करनी होती है तो बड़े लीडिंग वेरिएबल्स को पिकअप कर लेते हैं। जब वेरिएबल बता रहे हैं लीडिंग को, उनको पिक कर लिया। अब तीन वेरिएबल हमारे हाथ में आ गए, मनी सप्लाई, एक्सचेंज रेट एंड प्राइसेस ऑफ इंपोर्ट्स फ्रॉम यूएसए। अच्छा, उसके बाद आप मॉडल नंबर 3 में आए। So what are the significant variables? The variables that are playing significant The role. last period. Number one, again, exchange rate minus 6.67, T stats का मैं वैल्यू बोल देता हूँ ताकि आप जब सुने रिकॉर्डिंग तो आप टैली कर सकें। इसी तरह when you look at the prices of imports from China, significant role. When you look at the prices of import from UK, is a significant role. तो एक ओवरऑल मैसेज आता है। एक और चीज जो देखनी होती है वो है एफ स्टैट फ्रॉम ऑल द थ्री मॉडल्स। All from all the three models, the F stat are highly significant at 5%. The reason being, Which is greater than level of significance less than 5%, 0.00. अगर आप probability significant के नीचे probability दी है, ऐसा एक G लिखा हुआ है ना F वाले टेबल में, नोवा टेबल में, हर जगह F की वैल्यू significant है। And even if you compare with the value which we have considered as a benchmark or rule of thumb 4 इसमें कहा है, तो हर जगह ये the value of F is greater than 4. So you have two ways to consider the significance of F. Number one, T value when you are given B value, जो कि SIG है significance के नाम से दी गई है, and the second criteria is 4. अगर probability given नहीं है तो 4 calculate then all of the models, both the criteria are correct. Number one, if you compare it with 4, every F value is greater than 4. If you consider the probability is less than 5%. So using both the criteria, F is significant. So overall, models are significant. What is that? हम इसको अब इसके कंक्लूजन करवाते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 4, ये तो आपने वो पैरामीटर्स पे कर दिए, आपने you have to provide a general conclusion, and then based on this general conclusion, they have to suggest a policy recommendation. जनरल कंक्लूजन क्या है? आपने आस्क देख लिया, एफ देख लिया, टी स्टैट्स देख लिया। नाउ एफ इज टेलिंग यू वेदर यू आर इन मार्केट relevant factor affecting inflation or they are not relevant. Since the result is significant, it means you are considering the relevant factors in the model. And what are the relevant factors? Number one, money supply. Yes, it does play an important role in the regulation of inflation and causing inflation. And number two, the prices of imports from major trading partners, they are playing a very important role in the determination and the explanation of inflation in Pakistan. These are trading partners at time in USA and sometimes even UK, imports from UK are playing their role in the in causing inflation in Pakistan. तो ये important question है। और एक्सचेंज रेट का भी कहीं ना कहीं रोल आ गया है, एक मॉडल में सिग्निफिकेंट है। तो अब जनरल डिस्कशन ये होगी, जनरली स्पीकिंग, एट टाइम्स all these factors including prices of imports from the major trading partners, the money supply, so it goes unbridled, uncontrolled, and the exchange rate, if it is not managed, play a very important role in causing inflation in Pakistan. So they must be taken care of. Or who will take care of? These are the macroeconomic fundamentals. Which means this is when us the Parliament, the Economic Coordination Committee,
of these things, which are, they are the officers are responsible for managing all the departments. We can also call for one policy to see policy. The policy makers should ensure these regulations changed, taking any measure for which, अगर आप इसको फिर लंबा करना चाहें तो you can write cases. In some, I don't know, for example, talk about these management of the exchange rate. So who is responsible to manage the exchange rate? Who has managed exchange rate in Pakistan? There is certainly no economic reason, no economic decision has no managed the exchange rate for all of each why? Because law enforcement simply ensure governance to an extent. It means there were a lot of governance issues, there are governance issues. So number one, even keeping aside the macroeconomic fundamentals, there are professionals, just talking the governance, just placing the governance as an architect. You can manage the exchange rate. और दूसरा macroeconomic fundamental भी होता है, obviously we have to ensure the inflow of foreign exchange, the inflow of foreign exchange. All the Pakistani can be encouraged to send their money to dollars and foreign currency reserve better, and this is how the exchange rate in Pakistan can be managed and disciplined. और दूसरा ये एक और जो हो सकता है ये गवर्नेंस रेमिटेंसेस अर्निंग फ्रॉम ट्रेड ये फैक्टर एंड लेस स्पेंडिंग ऑन इनपुट्स तो इन सब का नेट इफेक्ट क्या होगा द मैनेजमेंट ऑफ एवरीथिंग ऑफ फॉरेन करेंसी रिजर्व्स तो if Pakistan is successful in building the foreign currency reserves in securing foreign currency reserves to an extent to maximum extent the exchange rate can be managed and inflation can be stabilized, prices can be stabilized in Pakistan. इसी तरह बाकी जो फैक्टर है वो ऐसे भी between Pakistan inflation growth से काम कंट्रोल तो उनको भी हम देख लेते हो सकता है. अब हम आ जाए जो हमने सोचा था कि स्ट्रक्चरल इंस्टेबिलिटी जो है वो शायद बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी in the determination of installing the inflation in Pakistan. Other structural stability before unfolding the area. And what we do none of the models in all the models it's all about it doesn't matter whether there is structural stability or instability. If there is inflation, overcoming reason or goes down, structural stability and stability is not playing any role. Based on these particular data which we have applied, partially of this model, ये हमारा outcome है. Structural stability यहाँ पे independent कोई role play नहीं करती. वजह क्या है? Significant. अब interpretation हमने सीखनी है बहुत सारे वेरिएबल होते हैं तो क्वालिटेटिव मेजर स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी जो है इस क्वालिटेटिव मेजर जिसके हम रिकॉर्डिंग की है 1 इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होगी आप सिग्निफिकेंस को साइड पर करना समझने के लिए इफ यू रेफर टू मॉडल नंबर 1 तो यहाँ पे इंस्टेबिलिटी को हमने कोड दिया होगा 1 तो ये कोएफिशिएंट आएगा ना सामने ये इसी जिसका कोड 1 है ना ये उसको एक्सप्लेन कर रहा होगा एक ये बात याद रखिए तो whenever there is a binary variable या qualitative variable और उसकी कोडिंग है 0 1 तो उसका कोएफिशिएंट जो वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा the property which has been coded 1 तो यहाँ पे इंस्टेबिलिटी को कोड 1 दिया हुआ है तो इसके सामने जो बीटा है वो है -0.047 इसका मतलब ये है कि if there is instability and if there is stability दोनों सिचुएशन को कंपेयर करेंगे in case of stability prices increasing more
that equation everything माइनस है तो जो इसका काउंटर पार्ट है वो स्टेबिलिटी है जीरो वोल्ट वाला तो जो 1 वोल्ट वाला है उसका साइन नेगेटिव है जिसका मतलब है इसका इफेक्ट इंस्टेबिलिटी होगी तो उस वक्त इक्वेशन ज्यादा कम होगा एज कंपेयर टू सिचुएशन व्हेन देयर इज स्टेबिलिटी बड़ा इंटरेस्टिंग फाइंडिंग अगर उल्टा होना चाहिए इंस्टेबिलिटी की वजह से इक्वेशन चेंज होगी यहाँ पे व्हेन देयर इज स्ट्रक्चरल stability equation is more and there is structural instability equation is less ये इस तरह से आपका इसका कोड 1 है उसके सामने अगर साइन पॉजिटिव है तो इसका मतलब जीरो कोड इसको आपने दिया हुआ है उसके मुकाबले में इसका इफेक्ट ज्यादा है यहाँ पे इन्फ्लेशन की जो अपीयरेंस है या हैपनिंग है तो ज्यादा सीरियस है एट द टाइम ऑफ स्टेबिलिटी जिसको जीरो बोलते हैं एंड इट इज लोअर रिलेटिवली लोअर एट द टाइम ऑफ इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान के केस में बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उत्तर पाकिस्तान में जो स्ट्रक्चरल इंस्टेबिलिटी है उसको प्रॉब्लम इन्फ्लेशन का बाकी प्रॉब्लम ज्यादा होता है ये रियल डेटा है स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी से हमारी इन्फ्लेशन ज्यादा हो रही है सर हाँ ये तो मैंने इंटरप्रिटेशन स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी की वजह से हमारी इन्फ्लेशन ज्यादा हो ये डाटा शो कर रहा है ये एक्चुअल डाटा है 1918 क्वार्टर 1 से 1923 क्वार्टर 3 तक ये इस हिस्टोरिक डेटा में ये पता है कि जब भी स्ट्रक्चर इंस्टेबिलिटी रही है क्राइसिस कुछ इन्फ्लेशन कम रहा है एज कंपेयर टू द सिचुएशन स्ट्रक्चर इंपोर्ट्स ज्यादा होंगे उसी का ही रीजन है इंपोर्ट्स ज्यादा इंपोर्ट स्पेंड मोर कंजम्पशन पैटर्न आपका स्टेबल है तो हम शायद कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं स्पेंडिंग ज्यादा कर रहे हैं इंपोर्ट प्रोडक्ट शायद ज्यादा यूज कर रहे हैं स्टेबिलिटी तो नहीं गई हाँ आप सही Come instability or the other instability. More instability, less instability. आप ये कह सकते हैं दूसरा के जो क्वालिटेटिव वेरिएबल है दूसरा के भी मॉडल के रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करूँ आप हम करना लेकिन पहले ये मैं ऊपर क्लास में अपलोड कर दूंगा ठीक है इसका आपने 3 घंटे में इसका आंसर लेके अपलोड करना है 3 घंटे के बाद वो क्लोज हो जाए अपलोड नहीं होगा जब भी होगा अब पहले से सपोर्ट करेंगे नहीं मुश्किल में हम सफर कर ऐसे कह रहा हूँ कि आप पहले हम कर जाएंगे इसको कर देंगे वो ठीक है ठीक है कर देगा नहीं जाएगा ये रिकॉर्डिंग हो गई है बाद में अब आप